Supreme Court, after examining the entire evidence which was available against them, has held that these were the main conspirators. These were the people who had actually devised the entire conspiracy. They had hatched the conspiracy, executed it. So these were the kingpins. These were the masterminds of the 2020 Delhi riots. So holding them to be the mastermind, Supreme Court has denied bail to them. Supreme Court has held that delay would not act as a trump card. And considering the gravity of the offence, their role, individual role, evidences available against them, they do not deserve the liberty of bail. So Supreme Court also tried to strike a incarceration of the accused person. So what were your arguments in the opposition to their submissions, sir? See, we had initially, when the arguments in the matter started, the accused did not argue on merits. They somehow avoided arguments on the merits of the matter, meaning the evidence which is available against them. The entire argument was focused on delay. So the argument was that since they have spent considerable period of time inside the jail, they should be granted bail because trial is likely not to be finished in near future. So, repelling that argument, the Honorable Supreme Court said that delay cannot be sole ground for granting bail in UAP offence. Had it been an ordinary offence, yes, certainly it will be a ground. But in special statutes, where sovereignty and integrity of India has been challenged, threatened, in those cases, the role of each individual has to be seen, and if the gravity of the offence is of such magnitude that it does not justify grant of bail, bail should be denied even if there is a long period of incarceration. जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है, उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी, तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा।